of Information and Broadcasting of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Fawad Chaudhry, to sign the Agreement on Cooperation in the Field of Television and Radio Broadcasting. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri of Pakistan on Climate Change, Mr. Malik Amin Aslam, to sign the MOU on cooperation in the field of environment and climate change. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari, Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hamda Pokiston Islom Respublikasi Bosh vazirining iqlim o'zgarishi masalalari bo'yicha maslahatchisi Malik Amin Aslam atrof muhit va iqlim o'zgarish sohasida anglashuv memorandumini imzolaydilar. I request Honorable Secretary of the Security Council of the Republic of Uzbekistan, Mr. Viktor Makhmudov, and Honorable Advisor to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan on National Security, Mr. Mueed Yusuf, to sign the comprehensive program to further develop cooperation between Uzbekistan and Pakistan in the field of security for the year 2022. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov hamda Pokiston Islom Respublikasi Bosh vazirining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Mueed Yusuf xavfsizlik sohasida 2022-yilga mo'ljallangan kompleks dasturni imzolaydilar. I request the Honorable Minister of Culture of the Republic of Uzbekistan, Mr. Uzbek Nazarbekov, and the Honorable Minister of Information and Broadcasting of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Fawad Chaudhry, to sign the Agreement on Cooperation in the field of television and radio broadcasting. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda Pokiston Islom Respublikasi Axborot va televideniya vaziri Shavkat Chaudhry teleradio ishtirish sohasida bitimni imzolaydilar. I request the Honorable Minister for Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, Mr. Abdulaziz Kamilov, and Honorable Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony of the Islamic Republic of Pakistan, Peer Nurul Haq Qadri, to sign the MOU for promotion of pilgrimage tourism. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov hamda Pokiston Islom Respublikasi din ishlari va konfessiyalar aro totuvlik vaziri Peer Nurul Haq Qadri ziyorat turizmini rag'batlantirish bo'yicha anglashuv memorandumini imzolaydilar. I request Honorable Deputy Prime Minister and Minister of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, Mr. Sardar Umurzoqov, and Honorable Advisor to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan on Commerce and Investment, Mr. Abdul Razak Daud, to sign the Preferential Trade Agreement. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari, Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hamda Pokiston Islom Respublikasi Bosh vazirining savdo va investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Abdul Razzoq Davud imtiyozli savdo to'g'risida hukumatlar aro bitimni imzolaydilar. And finally, I request the Honorable Excellencies, President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Mr. Shavkat Mirziyoyev, and Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Imran Khan, to sign the Pakistan-Uzbekistan Joint Declaration, Next Steps in the Strategic Partnership. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari hamda Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Imron Xon janobi oliylari O'zbekiston Respublikasi bilan Pokiston Islom Respublikasi o'rtasida strategik sheriklikning kelgusi qadamlari to'g'risida qo'shma deklaratsiyani imzolaydilar.
Ladies and gentlemen, this brings us to the end of our signing ceremony. We shall now proceed with the media stakeouts. Thank you. Hurmatli xonimlar va janoblar, shuning bilan ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi yakunlandi. Rahbarlar ommaviy axborot vositalariga bayonot beradilar. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज प्रेसिडेंट शफ़कत को पाकिस्तान आने पे खुशामदीद कहता हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने हमारा इस्तकबाल किया था ताशकंद में और उसके बाद फिर हमारी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी बुखारा और समरकंद में, तो मैं जो मेरी डेलीगेशन गई थी उसकी तरफ से आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। Уважаемый господин президент Узбекской республики, добро пожаловать. Я присутствую вас и вашей делегации, что вы видели Пакистан. И тоже благодарен, что когда я был в визите в Узбекистане, вы организовали в смысле экскурсию в Ташкенте, в Бухаре. Мы много что получили от этой экскурсии. और प्रेसिडेंट साहब, जो आपने और पूरी हमारे साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ताल्लुकात थे उज़्बेकिस्तान के साथ इस 400-500 साल तक इस खिते का और उज़्बेकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात थे और वो पिछले कोई 150-200 साल से जो टूट गए थे, तो हमने ये फ़ैसला किया है आपने और मैंने कि इन ताल्लुकात को फिर जोड़ें हम, और ये सिर्फ तिजारत ही ना हो बल्कि ये हमारे जो कल्चरल ताल्लुकात थे, हमारी तारीख़ थी, उस सब को हम सामने रखते हुए अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाएं। Исторически мы имели связи уже 500 лет, но во время СССР эти отношения были прекращены. Мы сейчас надеемся, что исторические связи будут осуществлены, и обе страны будут взаимосвязи и будут связаны туризмом и в области торговли. पहले तो तिजारत हमारा जब से हमारी मुलाकात हुई है, जब से मैं और आपने फ़ैसला किया कि हम अपने मुल्क के ताल्लुकात बढ़ाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब तक 50% एक साल के अंदर हमारी आपस में तिजारत बढ़ी है। और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान बिजनेसमैन और जो उज़्बेकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटीज़ थी, उसके बीच में 5 गुना ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, यानी आपस में मिलके उन्होंने बिजनेसेस शुरू किए। Я рад и удовлетворен, что уже 50% торговли больше стало между Узбекистаном и Пакистаном. И надеемся, что и дальше будет развивать наши отношения и взаимовыгоднее, и больше будет визиты бизнесменов из Узбекистана и из Пакистана. और कल भी मुलाकात है हमारी, कल भी हुई बिजनेसेस के साथ पाकिस्तानी बिजनेसेस, और आपकी मुलाकातें आपकी उज़्बेकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, और इंशाल्लाह कल ये आगे फिर भी मीटिंग्स हैं जो मैं और आप अटेंड करेंगे। Вчера встречались бизнесмены обеих стран и разделили мнение, и завтра тоже будет еще раз встречаться, и будет подписаны многие договоры. आपने जो अभी मुझे शुक्रिया अदा करना था, जो किताब आपने प्रेजेंट की, जिसमें आपने ख़ुद इंटरेस्ट लेके कि उज़्बेकिस्तान की ज़बान में और उर्दू में कितने ज़्यादा लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, तकरीबन मेरे ख़्याल में आपने अभी जो मुझे किताब दी थी, हाँ, 3,000 हमारे एक ही उर्दू में और उज़्बेकिस्तान में वो जो मिलते हैं एक दूसरे से, तो मैं उसका भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने यही नहीं सिर्फ फ़ैसला किया कि हम तिजारत बढ़ाएंगे, हम एक जो ज़हीरुद्दीन बाबर जो पहला मुग़ल बादशाह था जो उज़्बेकिस्तान से थे, तो उसके ऊपर अब मिलके हम जॉइंटली एक फ़िल्म भी बना रहे हैं। Вы только что мне подарили книгу, там около 3000 слов, и в узбекском языке, и в нашем
язык урду. Это очень рад. И мы планируем Захируддин Бабар. Об Захируддин Бабаре, чтобы драма это, или фильм, чтобы издали, и мы будем это... और हमारा फैसला ये हुआ कि हम अपनी कनेक्टिविटी उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के थ्रू, अफ़गानिस्तान के ज़रिए आपस में जो कनेक्ट करने का हमारा प्लान है, जिसमें सबसे पहले अभी तो ट्रक्स जाने शुरू हो गए हैं, हवाई जहाज़ों से कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। वो जो हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन पाकिस्तान आएगी और PIA उधर जाएगी। इससे टूरिज़म भी बढ़ेगी, इससे हमारी तिजारत भी बढ़ेगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे हमने फ़ैसला किया है कि जो ट्रेन जाएगी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के ज़रिए उज़्बेकिस्तान, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट भी करेगी और जो हमें पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को पाकिस्तान और फिर गवादर से कनेक्ट करेगी। Это большой проект, это связи между Узбекистаном и Пакистаном через Афганистан. Мы надеемся, что связи будут установлены и по шоссе, и по железной дороге, и по авиации, и торговля будет развиваться постепенно. हमने будет соединенный с Гвадором. हमने पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आपके सामने कश्मीर के ऊपर रखा। हमारे ख़्याल में कि जो कश्मीर में हो रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है, इंटरनेशनल लॉज़ की वायलेशन है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन है, और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर उसी तरह इन्फोर्स करे इंटरनेशनल लॉ जो यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए। Кашмирский еще очень важный вопрос. Кашмирский вопрос очень важен для Пакистана. А мы надеемся, что Узбекистан будет все сделать, чтобы эта резолюция Совета Безопасности была осуществлена, и международное сообщество поддержало Пакистана. और आखिर में मिस्टर प्रेसिडेंट, इस्लामोफोबिया के ऊपर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उसके ऊपर एक मुसलमान मुल्कों को मिल के कैंपेन करनी चाहिए। और मैं अभी भी जो हमने कैंपेन की, जिसमें पाकिस्तान, मुझे बड़ा फ़ख्र, हमने लीड किया वो कैंपेन, कि दो मगरबी ममालिक के सरबराहों ने इस चीज़ को हमारे मौक़िफ़ को के साथ बिल्कुल उन्होंने एग्री किया है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। एक प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, दोनों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती थी, तो आप और हमारा दोनों का इस चीज़ के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है। Мы имеем общее, в смысле, мнение, взгляды, что касается исламофобии. И недавно президент Путин и премьер-министр Канады тоже сказал, что которая идет, в смысле, там, пропаганда против ислама. Мы соединены будем делать все то, чтобы в смысле это решать эту проблему. और मैं सिर्फ अफ़गानिस्तान से आखिर में ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी बात कि ये जो कनेक्टिविटी होगी पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान और फिर आगे, इससे सिर्फ यही नहीं फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, इसका उज़्बेकिस्तान को सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, इसका अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जिन लोगों ने 40 साल एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और अब अफ़गानिस्तान में कम से कम अमन है। तो एक तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, हमने फ़ैसला किया है कि हम किसी तरह ये जो अफ़गानिस्तान का पैसा इन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत पहले लोग मुश्किल में थे और मुश्किलात में इजाफ़ा है, तो हम लॉबी करेंगे उसके ऊपर, और फिर अफ़गानिस्तान और सारे जो इलाके के लोग हैं उन सब से मिल के वो तय करेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से
अफ़गानिस्तान को रिकग्निशन मिल सकती है, वो क्या चीज़ अफ़गानिस्तान करेगा कि वो उनको दुनिया रिकग्नाइज करेगी। तो वो हमने फैसला किया है, हम मिल के इसकी कैंपेन करेंगे। Я еще раз говорю об Афганистане, что если будет в Афганистане, не будет война, будет все спокойно, мы будем связаны с Афганистаном и с Узбекистаном. И взаимовыгоды больше получит Афганистан, чем мы страны. Мы хотим, чтобы в Афганистане было спокойно. И те деньги, которые конфисковали это западные страны, чтобы они отдали эти деньги Афганистану, и бедный Афганистан, чтобы стал на своих ногах. Hurmatli bosh vazir janoblari, hurmatli ommaviy axborot vakillari, qadrli do'stlar. Avvalambor go'zal va betakror Pokiston diyorida delegatsiyamizga ko'rsatilayotgan samimiy mehmondo'stlik uchun mamlakat rahbariyati va xalqiga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Your Excellency, Mr. Prime Minister, dear representative of mass media, dear friends, first of all, I would like to thank you all, of course, the leadership of Pakistan and people of Pakistan for the great respect and hospitality you're showing to the delegation of Uzbekistan and the beautiful and unique land of Pakistan. Fursatdan foydalanib, barchangizni yaqinlashib kelayotgan Pokiston kuni bayrami bilan yana bir marta chin qalbimdan qizg'in tabriklayman. Using this opportunity one more time, I would like to sincerely congratulate you all with the occasion of upcoming holiday, great holiday, Pakistan Day. Davlatingiz siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda erishilgan yutuqlaridan, uning jahonda ortib borayotgan nufuzi va obro'sidan do'st sifatida biz benihoyat xursandmiz. As a friend of Pakistan, we are very glad to acknowledge the great achievements your country is achieving in the areas of political development, social, economical development, and cultural development. Ochig'ini aytaman, ushbu tashrifimiz anchadan beri kutilgan edi, lekin pandemiya cho'zilgani sababli biz bu tarixiy uchrashuvimizga nihoyatda puxta tayyorgarlik ko'rganimiz uchun bugungi kunga nasib qildi va bu voqea diplomatik munosabatlarimiz o'rnatilganining qutlug' 30 yilligi arafasida bo'layotgani ham alohida ahamiyatga egadir. In fact, I would like to honestly acknowledge that this visit was long awaited, and we have been actually planning this visit for quite a long time, but because of the pandemic situation, it took a little longer, but during that time, we decided to get ready to prepare ourselves to this visit in order to make all the necessary steps. This very occasion is taking place in the celebration of the 30th anniversary of building the diplomatic relations between our countries, and it gives another good signs of importance for this issue. Biz Pokiston bilan birgalikda nafaqat ikki mamlakat, balki strategik jihatdan muhim bo'lgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasida mustahkam hamkorlik ko'prigini bunyod etyapmiz. And together with Pakistan, we're not only building very strong strategic cooperation between our countries, but also we are actually constructing and building that very strong and important bridge between Central Asia and South Asia. Albatta, bugun hurmatli do'stlar, biz bosh vazir Imron janoblari bilan o'tkazilgan sermahsul ishonarli bir-birimizga juda ko'pdan beri bu muloqotimizni kutgan edik. Mana shu muzokaralarimiz davomida ikki tomonlama hamkorligimiz holati va istiqbollarini yuzasidan atroflicha fikr almashdik. And dear friends, today with His Excellency Prime Minister Mr. Imran Khan, we have discussed a lot of issues and that we've been waiting for some time, and we had very productive talks, and we had actually a very good occasion to talk about the existing situation and the progress and the future achievements that we are actually very positive and decisive to achieve.
Muloqotlarimiz chog'ida hukumatlarimiz amalga oshirayotgan yangi O'zbekiston, Naya Pokiston dasturlarini mushtarak ekanini yana bir bor ta'kidladik. During our negotiations, we have one more time underlined that there are a lot of similarities between the new Uzbekistan program and the Naya Pakistan program that our governments are implementing. Ayniqsa biz mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar ko'lami jadal kengayib borayotganini katta mamnuniyat bilan ta'kidladik. And with great pleasure, we have also stressed out that economic and trade relations between our countries has been developing very fast and in an expedited manner. Savdo va iqtisodiy yo'nalishlardagi aloqalarimizni chuqurlashtirish uchun katta salohiyat mavjudligini aytib o'tdik. And we have also mentioned that there is a huge opportunity and capacity even further develop and deepen our ties when it comes to trade and the economic relations. Xususan bugun imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimning imzolangani yuk tashuvchilarining tashuvlarning boshlanayotgani o'zaro manfaatli hamkorligimiz yo'lida yangi qadamlar bo'ldi. Specifically, the preferential trade agreement that was signed today, and that those cargo shipments that have, the transportations that have started today became another very important step towards strengthening our relations. Muzokaralar davomida Pokiston hududi orqali xalqaro dengiz portlariga chiquvchi Termiz, Mozori Sharif, Qabul, Peshawar strategik temir yo'lini qurish ishlarini yaqin muddatlarda boshlash muhimligini alohida ta'kidladik. And we have especially pointed out that it is very important to start the work aimed at building the railway, Termiz, Mazar-e Sharif, Kabul, Peshawar railway that will link us to the seaports, international seaports of Pakistan. And this is very important to start that work in the near future. Tranzit masalalarini shaxsan nazoratga olish to'g'risida bosh vazir janoblari bilan alohida kelishib oldik. And we have reached a special separate agreement with Mr. Prime Minister about installing this personal control over the transit-related issues. Hududlarimiz o'rtasida bordi keldilar jonlashganini biz uchun ayniqsa e'tiborga molik. Misol uchun Namangan va Panjob viloyatlari o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalarini yuqori darajada rivojlanyapti. And it is very important for us as well that our regions are building connections and ties between themselves. And for example, there is building new relations between Namangan region of Uzbekistan and Punjab province of Pakistan, with this very good new level of development. Biz mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va Afg'onistondagi bugungi vaziyat yuzasidan batafsil fikr almashdik. Ayniqsa ushbu mamlakatda kun sayin murakkablashayotgan gumanitar holat ikki tomonda ham jiddiy tashvish va xavotir uyg'otayotganini qayd etdik. We have also discussed the issues related to regional security, and it is very important to ensure that regional security will be built, specifically taking into consideration that Afghanistan situation, and it is getting even more difficult and complicated day after day, and it is having certain impacts on the well-being of population of Afghanistan. That's why we, both sides are underlined a great concern on this situation in Afghanistan. Biz xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonga insonparvarlik ko'magini ko'rsatishga e'tiborni yanada kuchaytirishga chaqiramiz. And we will call international community to pay even greater attention to providing humanitarian aid and assistance to Afghanistan. Ushbu mamlakatning xorijiy banklardagi moliyaviy aktivlariga sanksiyalarni bekor qilish bo'yicha bizning yondoshuvlarimiz birga alohida bir ekanliklarini alohida qayd etdik. We have specifically and separately underlined that we have common views when it comes to the necessity of cancelling the sanctions that were imposed on the funds of Afghanistan that are located in the foreign banks. Biz
Jahon sayyohlik tashkiloti bosh assambleyasi 25-sessiyasi Samarqand shahrida o'tkazish tashabbusini Pokiston tomonidan ma'qullangani, qo'llab-quvvatlangani uchun minnatdorchilik bildiramiz. And we would like to express our gratitude for Pakistan for providing support to our proposal of organizing the 25th session of the World Tourism Organization's meeting in the Samarkand city of Uzbekistan. O'z navbatda biz 2025-2026 yillar uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi nodoimiy a'zoligiga Pokiston nomzodiga ovoz berishimiz yana bir bor ma'lum qilamiz. At the same time, we would like one more time to announce that we will vote for Pakistan's becoming non-permanent member of UN Security Council for the period of 2025-2026. Hurmatli jurnalistlar, qadimiy Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekiston va Pokiston xalqlarini azaldan umumiy tarix, o'xshash til va boy ma'naviy meros chambarchas bog'lab turadi. Dear representatives of mass media, I would like to say that the great countries of Pakistan and Uzbekistan have very strong ties being located in the crossroads of the Great Silk Road, and we have very a lot of similarities when it comes to history and a very similar language and a very rich cultural legacy. Biz bugun har ikki qardosh xalqlarning ko'hna an'analari, boqiy ma'naviy rishtalarini yanada qayta tiklayapmiz. And today we are actually rebuilding those bonds and links between the two great and brotherly people of these two countries. Ilm fan, ta'lim, sanoat, kino, sport, yoshlar masalasi, axborot hamkorligi sohalaridagi aloqalarni bundan keyin ham chuqurlashtirishga kelishib oldik. We have agreed that we will further deepen our cooperation in the areas as science, education, arts, cinema, sports, and the youth, as well as in the information. Yana bir quvonarli holat O'zbekistonda yil sayin urdu tilini o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Yaqinda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida urdu tili, adabiyoti, Pokiston tarixi va madaniyati kafedrasi tashkil qilindi. Another good development I would